में मैं रुक गया था। तो वापस से स्टार्ट हो रहा पूरा? नहीं, मैं बीच में छोड़ दिया था, वो कैंसिल कर दिया था, मैं कुछ ढूंढ रहा हूँ बोल के। Okay, so this is the location. Okay, when I'm trying to create a location, मैं एक नया लोकेशन का आईडी क्रिएट करूंगा और कोड ऑलरेडी है। लेट्स से इंडोर दे दूंगा। ओके, इसका स्टेटस एक्टिव है, इट मींस आई वांट टू यूज दिस लोकेशन ग्रुप। अगर इन केस इफ यू वांट टू ग्रुप अ सेट ऑफ लोकेशंस, लाइक लेट्स से अभी एशिया पैसिफिक है। एशिया पैसिफिक में वी हैव सेट ऑफ कंट्रीज लाइक सिंगापुर, जापान, इंडिया, मलेशिया, जो भी एशियन कंट्रीज है वो सब उसमें आएंगे। ओके, व्हेन इट कम्स टू अरब कंट्रीज वो सब मिडिल ईस्ट में आएंगे। यूएस का आप लेंगे तो वो लैटम बोलते हैं, लैटिन अमेरिका। ओके, और यूरोप का पूरा एक सेट हो गया है। नॉर्थ अमेरिका यहाँ पे एक ग्रुप है। तो व्हेन यू क्रिएट a particular location, if you want to map it और एक ग्रुप में आपको उसको ऐड करना है, so you already have this location group, you can select any of these in case if you want to, or if you don't want to you can just leave this like this. And then time zone के लिए इंडिया का एशिया, देन इंडिया। सो टाइम जोन के लिए यहाँ पे पहले हमें कॉन्टिनेंट देना पड़ेगा, उसके बाद यू कैन सेलेक्ट आइदर द कंट्री और द सिटी। ओके, सो मैं एशिया बोल के टाइप किया, उसके बाद मुझे कोलकाता मिला, आई सेलेक्टेड दिस वन। स्टैंडर्ड वीकली आवर्स, एज आई मेंशन्ड अर्लियर, वीकली आवर्स बोले तो हाउ मेनी आवर्स यू आर गोइंग टू वर्क इन अ वीक। ओके, दैट विल बी कैप्चर्ड इन द standard weekly hours. So in case if you're working 49 hours per day and for 5 days, it means 45 hours per week. Geozone, it is again grouping your particular location to a particular group of geozone. So in case if you want to map it to a particular country, okay, वो आप select कर सकते हो. It means this location, this city belongs to this particular geozone, India. ओके, उसके बाद इफ यू कम डाउन, यहाँ पे आपको कंट्री बोल के दिखेगा। ओके, सो यू सेलेक्ट एनी ऑफ द कंट्रीज हियर। लेट्स आई सेलेक्ट यूएसए। If you're talking about India and why selecting US? हाँ नहीं, मैंने यूएसए के लिए कुछ चेंजेस किया था ना, वो रिफ्लेक्ट हो रहे कि नहीं बोल के। ओके, लेट्स डू दिस वंस अगेन। व्हाट विल डू इज विल गो टू द कंट्री इंडिया। दिस इज कॉर्पोरेट डेटा मॉडल, कंट्री स्पेसिफिक कॉर्पोरेट डेटा मॉडल। तो यहाँ पे हम इंडिया कंट्री को जाएंगे, ठीक है। तो जापान, टेबल व्यू में इजी रहेगा। ओके, ऑलराइट, लेट्स गो टू टेबल व्यू। IND, ओके, यहाँ पे मिल गया मुझे, ठीक है। दिस इज द कंट्री। नाउ यहाँ पे मुझे कॉर्पोरेट एड्रेस मिल गया, और कॉर्पोरेट एड्रेस में क्या क्या फील्ड्स है, इफ आई क्लिक दिस वन आई विल बी एबल टू सी ऑल ऑफ देम। ओके, सो दीज आर ऑल द IDs. As I mentioned earlier, never try to make any changes to the ID or code. Okay, जो भी आपको करना है you can do it to the labels. तो यहाँ पे मैं एड्रेस वन का लेबल क्लिक कर रहा हूँ एंड मैं इसको चेंज कर दूंगा। आई एम मेकिंग दिस टू नेम, और सेम थिंग मैं इसको कॉपी करके इंग्लिश जीबी में भी वही चेंज करके, क्योंकि मेरा डिफॉल्ट लैंग्वेज इज इंग्लिश जीबी यूके। फिर ये हो गया, फर्स्ट फील्ड इज डन। नाउ आई एम गोइंग टू द सेकंड फील्ड। यहाँ पे एड्रेस लाइन 2 बोल के है। आई एम गोइंग टू गिव इट एज बिल्डिंग नेम।
See, same thing and copying to English GB also. ओके, सो मैं इंडिया का कॉर्पोरेट एड्रेस में पहले दो फील्ड्स का मैंने एट्रीब्यूट चेंज कर दिया, उसका लेबल चेंज किया. Okay, this is done. Let's go to provisioning system. Let's import this. Okay, changes are uploaded successfully. Let's try to refresh this. So यहाँ पे इंडिया के जब हम इंडिया सेलेक्ट करेंगे, sorry, not this one, sorry. ओके, ये देखो आ गया लोकेशन नेम, बिल्डिंग नेम. ओके, सो अगर आपको कंपनी का एड्रेस रिलेटेड कुछ चेंजेस करना है, कॉर्पोरेट एड्रेस का चेंजेस करना है, देन यू विल बी यूजिंग कंट्री स्पेसिफिक कॉर्पोरेट डेटा मॉडल. ओके, तो एक एक कंट्री के लिए अलग सा सेक्शन है, और ईच सेक्शन में आपको वो कंट्री का रिलेटेड फील्ड्स ही डिफाइन करना है. इफ यू आर एक्सपेक्टिंग zip code to be configured, then you have to go to USA only. If you want to configure pin code, then you have to go to Indian corporate address object only. Okay, तो based on what country you select, उसके हिसाब से यहाँ पे field का नाम दिखेंगे. So when you're trying to create a location and if you want to add address to that location, then you come down in the location foundation object. Okay, see this is location. और नीचे आओगे और वो लोकेशन के लिए प्रॉपर कंपनी एड्रेस देना चाहते हो, देन यू कैन सेलेक्ट दैट पर्टिकुलर कंट्री. सो ये कंट्री के हिसाब से जो भी फील्ड्स आपने कंट्री स्पेसिफिक कॉर्पोरेट डेटा मॉडल में मेंटेन किया है, वही फील्ड्स यहाँ पे दिखेंगे. ओके, सो इन केस इफ यू सेलेक्ट यूएसए हियर, यूएस का रिलेटेड जो भी फील्ड्स आपने मेंटेन किया वही फील्ड्स यहाँ पे दिखेंगे. Okay, so you will select this country and see. I was actually creating a location for India, and I selected United States as the country. But you said that okay, India का location create कर रहे हैं, तो why are we not selecting Indian country? So exactly in the same way, whenever we are creating a location, we have to make sure that we are selecting the specific related country only. जो भी कंट्री आप सेलेक्ट करोगे उसका एड्रेस यहाँ पे मेंटेन कर सकते हो. ओके, सो द ओनली थिंग दैट यू मेंटेन इन कॉर्पोरेट कंट्री स्पेसिफिक कॉर्पोरेट डेटा मॉडल इज योर कॉर्पोरेट एड्रेस. दैट्स इट. ओके, नाउ the next most important data model is succession data model. Okay, so succession data model and country specific succession data model, these two can be accessed via instance. You can either use data model or you can even use instance also. So this can be done either ways. You can use a provisioning system and download the data model and make changes, or you can even make the changes using instance. So I hope now you're clear with how we make changes in the data models. तो succession data model में भी same setting रहेगा. Okay, I'll anyway open it for you and I'll show it to you. So first let's try to open the succession data model. Let's download it and open it. The same place succession management में आना है, और उसके बाद let's download the succession data model. तो सक्सेशन डेटा मॉडल के लिए सक्सेशन बोल के नहीं दिखेगा, इट विल जस्ट शो अस इंपोर्ट एक्सपोर्ट डेटा मॉडल. बट कंट्री स्पेसिफिक के लिए यहाँ पे कंट्री रीजन स्पेसिफिक एक्सएमएल फॉर सक्सेशन डेटा मॉडल बोल के रहेगा. ओके, सो यू हैव टू डाउनलोड दिस वन.
export file, submit. Okay, so my succession data model is ready. Hmm. Okay, so this is the succession data model. So earlier, Hmm. see on the left hand side for corporate data model, we are able to see HRIS elements, Hmm. right? HRIS element is the object, the foundation object. Hmm. HRIS field is each field in each object. ओके Hmm. जब हम पे कंपोनेंट या लोकेशन ओपन किया था तो लोकेशन में हमने बहुत सारे फील्ड्स देखे थे ओके सो दिस इज लेट्स से आई एम गोइंग टू लोकेशन और Hmm. एक कोई भी एक मैं लोकेशन ओपन करूंगा सो व्हेन आई ओपन लोकेशन सी आई एम एबल टू सी लॉट ऑफ फील्ड्स हियर Hmm. कोड है नेम डिस्क्रिप्शन स्टेटस लोकेशन ग्रुप ये सब है Hmm. ओके सो इन कॉर्पोरेट डेटा मॉडल वी आर एबल टू डिफाइन दीज फील्ड्स okay Hmm. so location was a corporate data model foundation object so वो फाउंडेशन ऑब्जेक्ट के लिए जब हम डेटा मॉडल में ओपन किया था तो वो HRIS एलिमेंट बोल के दिख रहा था यहाँ पे लेफ्ट में Hmm. ओके सो आई टाइप इट फॉर यू HRIS एलिमेंट दिस इज फॉर फाउंडेशन ऑब्जेक्ट ओके देन Hmm. HRIS फील्ड बोल के दिख रहा था so these are all fields inside the foundation object Foundation objects. okay now Hmm. these two are part of corporate data model right so when Hmm. we open corporate data model we are able to see this Hmm. उसके बाद we saw country specific corporate data model Hmm. sorry so इसमें क्या दिखा पहले हमें कंट्री दिखा था Hmm. कंट्री के अंदर गया तो हमें सेम यही चीज दिखे थे Hmm. so this one HRS element was address Hmm. कॉर्पोरेट एड्रेस बोल के दिख रहा था वहां पे राइट Hmm. रिमेंबर दिस Yeah. नेक्स्ट वी हैव सक्सेशन डेटा मॉडल इसमें हमें क्या दिख रहा है स्टैंडर्ड एलिमेंट बोल के दिख रहा है Standard element. Hmm. या दिस इज जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन कोई ये सब नहीं पूछेगा इसमें क्या दिखेगा इसमें क्या दिखेगा बोल के बट Hmm. पूरा सब टॉपिक कवर कर रहा हूं मैं तो Hmm. स्टैंडर्ड एलिमेंट में हमें क्या देखने के लिए मिलेगा पोर्टलेट Hmm. Okay. So earlier when we opened the employee profile, we were able to see lot of portlets like personal information portlet, biographical portlet, address information, national ID information, dependents information, job information, compensation information. So जितने भी portlets हमने देखा है वो सब Hmm. data model में standard element बोल के दिखेगा. Hmm. Okay. So let's try to open some of the standard elements. Or let's go to table view.
Just give me a minute. Hmm.